नागेंद्र नायक नैरेटिव। सैटरडे है तो निकल पड़े एक और ट्रैवल ब्लॉग के लिए। तो वी आर ऑन आवर वे टू श्रृंगेरी राइट नाउ। हेबरी क्रॉस कर लिए हैं अराउंड 40-45 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रृंगेरी। तो हाँ, नज़ारा बहुत अच्छा था, सोचा यहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो साथ में दिखाता हूँ श्रृंगेरी टेम्पल। लेट्स गो। So guys, we have reached the Sringeri Mutt right now. So the Gopura you can see here is a 127 feet Gopura, जिसके उस तरफ एक दूसरी दुनिया बसती है, which is 14th century world. तो उधर चलते हैं and as we go to the places, I will tell you whatever I know about the history of the place. Let's go. So guys, this temple is said to be established by Jagadguru Adi Shankaracharya. He's traveled all around India to impart knowledge that he had gained through his sadhanas, and he's also said to be the one who Naga Sadhus का जो एक community है उसको form किया था. So he is the founder of Naga Sadhu community. Where it was said that it is not only Shastra but it is also Shastra that is needed to protect the religion or the culture or the knowledge of the land. So that is where he is, and this is one of those temples that was set up or established by Shankaracharya. So guys, what you see behind me is Sringeri Sharadamba Temple. यहाँ पे photography allowed नहीं है, so that is the reason why मैं सिर्फ बाहर का premise दिखा रहा हूँ. And इसके बाद there's another temple here. वहाँ पे चलते हैं. यहाँ पे I will seek the blessings and come and then catch you. ये देखो टेम्पल प्रीमाइस में क्या कर रहे हैं. So while the Sharadamba temple is made of plain walls and a very huge Sharadamba statue, the next temple you see here is the iconic depiction of Sringeri temple. ये है Vidyashankara temple, and the walls of this temple is completely carved with a lot of stories. तो देखते हैं, अगर फोटोग्राफी या जो भी वीडियोग्राफी अंदर तो अलाउड नहीं है, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, बट अगर बाहर के स्ट्रक्चर्स का वीडियो अलाउड है तो आई विल शो यू अ क्लोजर लुक ऑफ द टेम्पल. So the temple here has different type of carvings.
कहीं पे लोअर लेवल पे एनिमल्स के कार्विंग्स है, उसके ऊपर आते ही वॉर रिलेटेड हो गया, म्यूज़िक एंड डांस रिलेटेड हो गया, कल्चर रिलेटेड हो गया, एंड द एंटायर थिंग शोज सम डिपिक्शंस ऑफ दशावतारा और सम स्टोरीज फ्रॉम रामायणा एंड महाभारता एंड स्टफ्स लाइक दैट. ठीक है, तो इट्स अ ह्यूज डिटेल एंड certain things. I'll show you a couple of other things which are of great interest. Chalo. Guys, another structure. This is something that we have seen in Belur temple also. So Hoysala dynasty, they show this as their insignia. Basically, the Sala, who was the founder, depicted showing killing the lion. So guys, the architecture that you see here is mostly influenced by Hoysala style of architecture, but it also consists a combination of Hoysala and Vijayanagara dynasty का जो architecture style है, it is a combination of both of those. गाइस देखो, स्ट्रक्चर्स देख के उसके पीछे के स्टोरीज पता करने के लिए बहुत गहरा नॉलेज चाहिए, तो उतना तो है नहीं. लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि दशावतार जहाँ पे देखते हैं वो देख के समझ में आ जाता है. सो आई एक्चुअली फिगर्ड आउट कि कहाँ पे है दशावतार का डिपिक्शन, वो दिखा देता हूँ. चलो. सो गाइस, जब प्रदक्षिणा क्लॉकवाइज लगाते हो तो दशावतार आप लोगों को रिवर्स ऑर्डर में दिखेगा. What you can see here is Kalki, and उसके बाद बुद्धा बोलते हैं या गोमटेश्वरा बोलते हैं. There are different versions to what was the 9th avatar, and there you can see Krishna and Balarama, Rama and Lakshmana, Parashurama, and as you move this side, यहाँ पे देखो वामन अवतार है, नरसिम्हा अवतार है, Varaha is holding the small lady like that is Prithvi. And then as you come here, you see Kurma and Matsya Avatara. So these are the 10 avatars. So guys, this structure that you see is a complete chain made out of single stone. This is a monolithic structure. तो it's amazing कि कैसे मतलब एक ही स्ट्रक्चर को चेन फॉर्मेट में डाला गया है. These are separate from one another but still एक ही चीज़ में डाला गया है. Interesting, right? So the structure has 6 entrances, yeah, 6 doors basically, and these doors represent the 6 ritus. Okay, so that is how the entire structure is constructed. And यहाँ पे 3 doors है जो closed है. ठीक है, these represent Brahma, Vishnu and Maheshwara. So that is how the story has been signified. And उसके बाद there's one more structure I saw, and जहाँ पे काफ़ी फूल वूल चढ़ाए गए थे. So चलते हैं और उसका स्टोरी देखते हैं क्या है. Guys, the structure that you can see here is Kartyavira Arjuna, or he was also called the Sahasrabahu Arjuna. So he belongs to the period of Parashurama, and यहाँ पे दिख रहा है कि this idol is being prayed to. फूल वूल चढ़ाए हुए हैं, देखो यहाँ तक भी फूल चढ़ाए हुए हैं. So every morning people come and offer prayers. Basically he was somebody with 100 hands. तो I mean, कुछ अगर गुम हो गया है and stuffs when you have lost, people do come and pray to this idol. 100 hands, right? So it signifies that you can find things for you 100 times more efficiently, and that is why they come and offer prayers to him and try to get those lost things back. So here you can see a lot of representations of call it yoga sadhana or exercises, to be simple. ये देखो, you know how the stretching exercise is done or how the sitting postures are shown,
and all that. So there are a lot of structures inside the temple where photography or videography is not allowed. So one of the most interesting part is there are 12 pillars inside, which are called the Rashi Stamba. So each representing every zodiac sign. So 12 months and 12 zodiac signs. So they're constructed in a way that हर सीज़न में जैसे मतलब लूनर सोलर पोजीशंस चेंज होते हैं, एग्जैक्टली उस राशि में, जिस राशि में मतलब उस महीने का जो राशि है उसी राशि पर सनलाइट गिरता है. सो ऑल द 12 मंथ्स विच एवर आर द ज़ोडिएक साइंस प्रोमिनेंट ऑफ दैट मंथ, उस पे सनलाइट गिरता है. सो देन एज यू गो डाउन फर्दर, यहाँ पे रिवर है विच इज़ पॉपुलर फॉर द काइंड ऑफ फिशेस दैट दे हैव. उसके साथ में ये डेंजरस भी है क्योंकि यहाँ पे यू फाइंड अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं वो, पिरानास. तो जिस वजह से गेटिंग डाउन इनटू द वाटर इज कम्प्लीटली, ये प्रोहिबिटेड नहीं है, डेंजरस है. So guys, that is about the Sringeri temple and some of the stories that I knew or Vagisha helped me to find from the sources and stuff. I hope you enjoyed the vlog. I hope the vlog was informative. It was beautiful with all the structures that you saw. I hope you liked the vlog. Stay tuned for other contents. Tata. So guys, this is how Jagadguru Shankaracharya traveled all over India and established mutts. So it's a nice piece of information.